Well, there's a new date for the release of the BJP's mysteriously missing manifesto. The party has unveiled a 9-part charge sheet against the Congress-led UPA that it has termed as the most corrupt government of all time. Flanked by his colleagues Mukhtar Abbas Naqvi and Nirmala Sitharaman, BJP spokesperson Ravi Shankar Prasad read out the 9-part charge sheet with 42,000 inputs gathered by crowdsourcing. हमारा पहला आरोप यह है इस पत्र में कि श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के पद का गंभीर अवमूल्यन किया है. ए डेलिबरेट कॉन्शियस डिवैल्यूएशन ऑफ द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, where Dr. Manmohan Singh acted more like a CEO of a board where Srimati Sonia Gandhi and Rahul Gandhi had the controlling interest. इसलिए कोई टीम नहीं बन सकी, सारे मिनिस्टर्स ऑटोनोमस हो गए और ये सरकार इस प्रकार से चली. अपार्ट फ्रॉम लैक ऑफ ग्रोथ, it will be remembered as the most corrupt government of India since independence. डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसमें पूरे इकोनॉमी के हर इंजन्स को डिस्ट्रॉय किया गया है पूरे ऑथेंटिक डेटा के साथ, चाहे वो फिस्कल डेफिसिट हो, चाहे वो ग्रोथ रेट हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट हो, चाहे वो करंट अकाउंट डेफिसिट हो, चाहे वो एक्सटर्नल डेट हो या शॉर्ट टर्म डेट हो. इसको हमने दिखाया है. एंडलेस सागा ऑफ स्कैम, भ्रष्टाचार और लूट की शर्मनाक श्रृंखला. इसमें आपने देखा 2G स्पेक्ट्रम 1,76,000 करोड़, कोल स्कैम 1,86,000 करोड़, CWG स्कैम 70,000 करोड़, IG एयरपोर्ट लैंड ग्रांट स्कैम इन दिल्ली 50,000 करोड़, एयर इंडिया स्कैम परचेज 25 to 30,000 करोड़, रॉटन फूड स्कैम 58,000 करोड़, हसन अली मनी लॉन्ड्रिंग स्कैम 54,000 करोड़. इसमें हमने एक्सटर्नल सिक्योरिटी के चैलेंज को और इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंज को डिलिनेट किया है. More than 500 incidents of border violations by China in just last 2 years. The soft faces of Maoist, leftist extremist violence are also having a pride of place in the National Advisory Council. इस कारण से सरकार के पास इफेक्टिव स्ट्रैटेजी नहीं है, जबकि 170 जिले 5 प्रदेशों में, जिसमें 33 बहुत ही वल्नरेबल है, वहां माओइस्ट वायलेंस बहुत ही गंभीर रूप से है. द डिलिंकिंग ऑफ टेरर फ्रॉम डायलॉग एज फार एज रिलेशनशिप इन पाकिस्तान इज कंसर्न is one of the biggest foreign policy failures of this government. And all the leverage of Shri Vajpayee Musharraf agreement of January 2004, where for the first time Pakistan agreed not to permit its soil for terrorist attack against India, has been completely given a go-by. आज भारत की साख सारे पड़ोसी देशों में बहुत कमजोर हुई है, जिनसे हमारे अच्छे रिश्ते रहे हैं, कल्चरल, हिस्टोरिकल. इंडिया हैज लॉस्ट इट्स गुडविल and Chinese influence is rising. Well, the Congress has lost no time, though, in hitting back at this 9-part charge sheet launched by the BJP against it. ये कह तो देते हैं, लेकिन आंकड़े छिपाते हैं, क्योंकि इनको आंकड़ों से कोई लेना देना नहीं. इनको जो असत्य है वो उसको गले लगाए हुए हैं और असत्य की बात रोज प्रचार उस आधार पे प्रचार करते हैं, मंच पे बैठ के प्रचार करते हैं और जनता को सपने दिखाते हैं कि मैं बुलेट ट्रेन दे दूंगा. मालूम नहीं कौन सी बुलेट ट्रेन दे देंगे. मेट्रो तो दे नहीं पाए गुजरात की जनता को. Atir Khan, our associate editor, is with us live from the BJP headquarters in the national capital. Atir, the BJP has already been cornered. It's the only major party that hasn't put its manifesto out yet, and the reasons for that are obviously an embarrassment to the party. So in many ways, this charge sheet is almost like a stopgap, as the BJP has been cornered on the embarrassing issue of the lack of a manifesto. Well, that's right. Of late, the BJP had been on the black foot as far as manifesto is concerned for the delay in it. But very, very interestingly, Shiva, it has come up with this idea of coming up with a charge sheet like this. It's called Dark Decade in Governance. Yes. It's BJP's charge sheet on Congress-led UPA. So, it's basically not just an indictment on Congress UPA, but also the BSP and SP. The BJP goes on to say that though there is nothing new in this charge sheet, it's just a compilation of the news clippings which have been reported, nothing new which people do not know so far. But as you know, the memory of people is very short, and that is why the
BJP thought of reiterating the shortcomings, the allegations of misgovernance, corruption at a time which is just ahead of the election. So you know, this was launched in a very special setting behind me, and one will have to wait and watch how you know, what impact this sort of charge sheet had. As far as manifesto is concerned, the party says it's going to be launched on 7th, since there are some logistical problems. Thanks, Athir. We'll leave it there for the moment. Thanks very much for getting us that input.